So class 10th, in class 9th, you have studied about inertia. हाथ खड़े करके बताना, yes or no. If yes, raise your hands. Yes, 10th B has heard. Hands down. 10th C, have you heard? Okay, 10th C में कुछ बच्चों ने. Inertia means a body keeps on moving infinitely if no force acts on it. A body keeps on rest for any time if no motion, if no force acts on it, right? So this is about inertia. एक body rest में रहेगी, कोई force ना लगे, या motion में रहेगी, कोई force ना लगे. But am I teaching you motion? No. So why I am talking about inertia? So inertia बेटा सिर्फ motion और rest में नहीं है. आपका भी इनर्शिया ऑफ हॉलीडेज की छुट्टियों में रहे हम, ठीक है? तो वही इनर्शिया हम हॉलीडे मूड में ही है, अभी हम पढ़ाई के मूड में नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह इनर्शिया ऑफ स्लीप कि हम सो रहे हैं, आज हम 6 घंटे की जगह 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, तो हमें और नींद आती रहती है. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि इफ यू स्लीप ऑन संडेज, you say to your mom that I will rest for some more time, then for whole of the day you are tired, right? So this is due to inertia. And now inertia of work भी हो सकता है. अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सारा दिन और ज्यादा काम करते हैं. This is fact, है ना? Before starting the classes, कल तक मुझे लग रहा था हाय कल इतनी सारी क्लासेस है, कैसे लूंगी, क्या मुझसे ली जाएगी इतनी सारी क्लासेस, बहुत थकावट हो जाएगी, ये वो. But when I started teaching, when I start teaching classes, then I don't get any problem. I don't get tired. ठीक है? So हर चीज का इनर्शिया है. अगर काम करोगे थकोगे नहीं, इनर्शिया ऑफ वर्क रहेगा. रेस्टिंग मोड में चले जाओगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनफाइनाइटली चलेगा, जबकि तुम्हारी मम्मी आके तुम्हें एक लगाएगी नहीं कि उठो चलो काम करो, ठीक है? सो व्हाट आई मीन टू से कि कम आउट फ्रॉम इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड स्टार्ट मोशन, start working, right? And you will get inertia of work also, inertia of study also, which is required at your age, right? So everybody sit straight, concentrate on the screen, right? And adolescent age में हो, दिल नहीं करता, टीचर बोली जा रही है, हमारा दिल नहीं है, हमें आंसर देना है, बट अगेन अपने आप को उस मोड से बाहर निकालो, आंसर देना है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन आवर सराउंडिंग्स, है ना? बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं, तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या, वट एवर आई विल आस्क. सो देयर इज प्लांट ए, इट हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है. All these are flowers, leaves वो तो है ही है. This is plant A. All flowers form seeds and fruits. ध्यान से सुनना है. Except few weak flowers. कुछ कमजोर से होंगे, वो झड़ जाएंगे पहले. 10th है, गुड मॉर्निंग, ठीक है? थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हो, बट कॉन्सेंट्रेट, सीधा जो है बोर्ड पे आ जाओ, राइट? सो कॉन्सेंट्रेट है. प्लांट ए ये. Then there is another plant, plant B. In plant B, only few, कोई भी plant B, कहीं पे भी वो plant उस जैसा plant है, only few flowers form seeds and fruits. हम देखते हैं कि ये seed and fruit बना रहा है, और इसका जो alternate है, that flower is small
डू नॉट फॉर्म सीड, राइट। इधर फिर जो फ्लावर है, इट इज फॉर्मिंग सीड एंड फ्रूट, बट इट्स alternate flower, no flower or no seed or fruit, right? So these flowers, they form seeds and fruits. So 50% flowers form seeds and fruits, whereas these 50% don't form seeds and fruits. Then there is plant C. प्लांट भी जितने भी टाइप के हैं, हमें वो वैसे ही दिख रहे हैं। आपके वहां पर वो प्लांट है, हमारे चंडीगढ़ में सेम प्लांट है, सेम ही रिजल्ट है। In plant C, but we can see that it has two plants, right? But growing nearby. But here, one plant, it has healthy flowers. FLS means flowers, but no seeds and fruits. नेवर, ये इस प्लांट पे हमें कभी दिखे नहीं। हर साल फूल आते हैं, बट हमें इसमें कोई, हर साल फ्लावर्स आते हैं, बट वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी सीड्स और फ्रूट्स हियर। बट हियर another plant of same type has it form seeds and fruits. Now tell me, what is the difference between the three? Anyone from 10th A? 10th A, may I call? It is Grish. Grish is there. आजा बेटा, पहले जरा बोल के देखो 10th A की आवाज आ रही है हमें? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गिरीश, बोलिए बेटा। इन तीन Yes. प्लांट में क्या फर्क है? हाँ Madam, please repeat again. बेटा, ये तीन प्लांट्स है ना, तीन टाइप के प्लांट्स है। एक मैंगो प्लांट होगा, एक पपाया का प्लांट होगा, एक कोकोनट पाम है। किसी तरह से ये तीन टाइप के प्लांट है। इस प्लांट में सभी, यहाँ पे हमें सीड्स फ्रूट सेम प्लांट पे दिख रहा है। हर प्लांट ए पे हमें सीड्स फ्रूट्स नजर आते हैं। प्लांट बी जहां पर भी ग्रो कर रहे हैं, उसके 50% फ्लावर्स जो है वो सीड्स फ्रूट्स बना रहे हैं, 50% नहीं बना रहे। प्लांट सी में हमने क्या देखा है कि कुछ प्लांट साइड बाय साइड ग्रो करते हैं। एक प्लांट पे फ्रूट्स ही फ्रूट्स है और एक प्लांट पे कोई फ्रूट नहीं है। हर साल यही काम होता है। फ्लावर्स तो लगते हैं, बट नो फ्रूट्स। वाई? Because my plant don't have madam any madam another plant. प्लांट डज नॉट हैव अनदर एनी प्लांट, ऐसा तो नहीं है। चलिए गिरीश, आप यहीं रुकना है ना। देन दिया, दिया इज देयर। दिया कम। गिरीश, यू स्टे ओवर हियर। यस दिया, Yes, ma'am. कैन यू give me the reason why this is discrimination between plant A, B and C? C. Why there is discriminate? ऐसा क्यों है? क्यों डिफरेंसेस है? ए में सारे प्लांट्स में फ्रूट्स बन रहे हैं, यहाँ पे इन प्लांट्स में आधे फ्लावर्स फ्रूट्स बना रहे हैं, आधे नहीं बना रहे। यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिखते हैं जिसमें फ्रूट्स है ही नहीं है, और कुछ है जो फ्रूट से भरे हुए हैं। कैन यू टेल मी द रीजन? नहीं, आप बैठिए, आप दोनों बैठिए। लेट मी आस्क 10th C, 10th C महक, 10th C महक इज देयर? एब्सेंट है। मिथाली, आ जाओ जल्दी से, आओ बेटा, भाग कर आओ।
Ma'am, because fertilization is not taking place correctly in the plant C. फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस करेक्टली। चलिए मैं अब बताती हूँ आपको, है ना, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा वीक है। रखो फोन, माइक रखो। और बेटा, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली टू क्लास 10। मैंने यहाँ पे कंसेप्ट समझा दिया, समझो, ठीक है। और उसके बाद घर जाके यू नो अवर यूट्यूब चैनल के एडुकॉन ई लर्निंग, उसमें क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए, अपने नोट्स बनाइए। दैट विल बी बेनिफिशियल इन योर 10th क्लास एग्जाम्स, राइट। अभी समझो, करो, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखोगे, टाइम लगेगा। घर जाओगे, एक बार रिवीजन हो जाएगी, नोट्स बनेंगे। सो सी हियर व्हाट हैपेंस, व्हाई हम यहाँ पर आते हैं। प्लांट सी से हम देखते हैं कि दो प्लांट्स हैं हमारे गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, सेम तरह के हैं। एक पे फ्लावर्स है ही नहीं, एक पे फ्लावर्स तो है दोनों पे, बट एक फ्रूट्स बना रहे, दूसरे पे कभी फ्रूट्स नहीं लगे। एंड दैट मे बी पपाया, बिकॉज पपाया इज यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट मीन्स देयर इज मेल पपाया, देयर इज फीमेल पपाया। एंड है ना, कोई दूसरे जो है ग्रह से, कोई कोई दूसरे प्लेनेट से इंडिया में आएगा, इंडिया पे क्या, अर्थ पे आएगा, तो वहां कहेंगे लोग बहुत सारे हैं, बट कुछ बच्चे पैदा करते हैं, कुछ नहीं करते सब। तो उसमें क्या है कि एक मेल्स है, मेल्स कैन नॉट ब्रिंग द चाइल्ड, प्रोड्यूस द चाइल्ड, बच्चे तो हो सकते हैं बट दे कैन नॉट होल्ड द चाइल्ड। फीमेल्स बच्चे जो है वो रखती है, संभालती, राइट। सो लाइक दैट इन प्लांट्स। सो प्लांट सी क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स है ये। देयर आर सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट्स, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, दिस प्लांट इज नॉट बियरिंग सीड्स एंड फ्रूट्स बिकॉज दिस प्लांट इज ए मेल प्लांट, whereas this is female plant. So plant C is unisexual, plant ही unisexual है. So this plant B, you see, 50% flowers are changed into seeds and fruits, 50% do not, because these are male flowers, these are female flowers. Remember that seeds and fruits are formed by female sex organs only in plants also. So these flowers, so plant B जो है, it has unisexual flowers of both types. For example, cucumber, है ना, घिया जो है, घिया की बेल देखेंगे आप, बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो घिया नहीं बनाते, बिकॉज दे आर मेल फ्लावर्स। सो प्लांट बी क्या है, इट हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ बोथ टाइप, दोनों है, मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट। Whereas here, most of the flowers they form seeds and fruits because these are bisexual flowers, right? This plant has bisexual flowers. Is it right? ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं कि plants जो है, these are of two types, that is plant having bisexual flowers and plants having unisexual flowers. ये दो टाइप के आ जाते हैं। Plant has male and female flowers on same plant, whereas दूसरी जगह है there are separate male and female plant. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, लिख लो बेटा, केस स्टडी में ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, राइट। लिख लो, हिंट लिख लो, बट घर जाके नोट्स जरूर बनाने हैं।
It will take, I think, अगर 45 minutes की class है, it will take only 15 minutes to do that. So, what are the examples? Hibiscus, जिसको आप चाइना रोज कह देते हैं, then mango, lychee, rose, petunia, all these are bisexual flowers. उसके बाद सेकंड आ जाता है बेटा then your cucumber. Another is maize. इनमें क्या है? Plant has unisexual flowers of same type. Plant has unisexual flowers of same type. Sorry, of not same type. I'm sorry. Of both types. Of both types. Means male flower as well as female flower on same plant. ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो लिखना है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट. देन थर्ड इज date palm. Another is your papaya. It has separate male plant and female plant. So this is about, ठीक है, हम आगे कर रहे हैं फटाफट से. अगेन आई एम सेइंग के एडुकॉन ई लर्निंग यूट्यूब चैनल है, उस पे जाएं और ये विजिट करें लेक्चर. देन अनदर क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन जरूर लिखो मेरे साथ. इन ए रीजन most of insects are killed by using pesticides. People become happy, but they observed after few months that plants of the region has flowers, but they do not bear seeds. These plants used to bear
seeds and fruits previous year. Last year they formed seeds and fruits, but now most of the plants do not. Why? Why this happen? So 10th B Ishita. 10th B Ishita. Yes, Ishita is there, 10th B. 10th B का कुछ डिले आ रहा है, I don't know why. So, okay, no problem. अच्छा, Ishita is coming. Come, Ishita. Yes, ma'am. हाँ, can you tell me why the plants stopped producing seeds and fruits? Ma'am, because they stop fertilization. Why? Why no fertilization occurs? मुझे सुना नहीं, दोबारा से बोलो. Ma'am, because they stop doing fertilization. Why no fertilization? That is absolutely correct कि fertilization नहीं हुई तभी seeds fruits नहीं बने. But क्यों नहीं हुई? आपका थोड़ा सा लैग आ रहा है बेटा. आप बैठो. You please sit. हाँ जी, 10th A अरमान. Arman is there. चलिए, anybody from 10th A जिसको इसका आंसर पता है, कोई बताए. 10th C, anybody from 10th C? देखिए, बेटा, क्योंकि most 80% of the plants are pollinated by insects, right? और हमने क्या किया? Insects मार दिए. सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो. ढीले से होके नहीं बैठना. Everybody straight. 10th A, सीधे होके बैठो. क्योंकि इंसेक्ट्स ही मर गए. जब इंसेक्ट्स ही हमने एक रीजन के मार दिए तो पॉलिनेशन कैसे होगी? लिखो आंसर कि इन द एब्सेंस ऑफ इंसेक्ट्स, इन द एब्सेंस ऑफ द इंसेक्ट्स, pollination does not occur in most of the plants. सभी में तो नहीं हम कहते, in most of the plants. Pollination does not occur in most of the plants. Therefore, no seeds and flowers. ठीक है जी. So, pollinating agents क्या है? That is, wind है, insects है, दो तो मेन है ही है, कईयों में water भी है, right? So, let's do life cycle in plants. Mainly कौन से plants? Flowering plants की हम बात कर रहे हैं. इधर बातें नहीं, and everybody will draw with me, right? अपनी कॉपी खोलो पूरी और 2 पेजेस पे थोड़ी सी घुमाओ कॉपी और 2 पेजेस पे आपको बनानी है ये लाइफ साइकिल, राइट? सो this is plant, then it has flower, हम बात कर रहे हैं bisexual flowers की. So these are sepals, these are petals. They generally do not take part directly in reproduction. ठीक है? You know that. This is stamens and this is, pistil. This is stamens
and this is pistil. फंक्शन लिखो जल्दी से, राइट डाउन, दूसरे पेज पे राइट डाउन. सेपल्स, जल्दी से. सेपल्स, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन बड कंडीशन. दे प्रोटेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स इन बड कंडीशन. बड में सेपल्स ने बंद किया होता है. दे प्रोटेक्ट द सेक्सुअल पार्ट्स या सेक्स ऑर्गन्स इन बड कंडीशन. पेटल्स, petals are colored. Petals are mostly colored and attract insects. Attract insects for pollination. लिखते चलो. Attract insects किस लिए colored है? क्योंकि insects attract होते हैं. Attract insects for pollination. और फिर स्टार डाल के लिखना है. जो विंड है, विंड तो कलर से नहीं ना आती, तो wind pollinated flowers have dull colored petals. ग्रे से, ब्राउन से, छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, वो कोई अट्रैक्टिव नहीं होते जो विंड पॉलिनेटेड है. राइट डाउन. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स have dull colored petals and are small in size. And are small in size. जबकि जो बड़े बड़े कलरफुल फ्लावर्स है ना, इट मीन्स दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. ठीक है. और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए. द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स. बैट्स, चमगादड़, रात को एक्टिव है, रात को तो कलर दिखेंगे नहीं. द फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स हैव शाइनिंग पेटल्स. शाइन करेंगी, रात को चमकेंगी. एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ सेंट. परफ्यूम, खुशबू बहुत आती है. एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ सेंट टू अट्रैक्ट बैट्स. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैट पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस लॉट ऑफ नेक्टर. बैट पॉलिनेटेड and insect pollinated flowers produce lot of nectar to feed insects. है ना. वो कहते हैं कि भी अच्छा, इंसेक्ट्स अगर हमारी पॉलिनेशन कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ इंसेक्ट्स को देना चाहिए. व्हाट दे प्रोवाइड? दे प्रोवाइड फूड. सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स है. ठीक है जी. और यहाँ पे राइट डाउन. सेपल्स एंड पेटल्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन. हेल्प ही कर रहे हैं ना, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है. हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन बट डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. ये क्वेश्चन आया हुआ है. नेम द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स which do not directly take part in reproduction, that is sepals and petals. Teachers please check कि सभी बच्चे लिख रहे हैं. Sepals and petals are the parts of the flower which do not directly take part in reproduction. बेटा हमने वही कराना है जो आपके बोर्ड्स में आना है, इसलिए. और छोटे तरीके से, बहुत इतनी डिटेलिंग नहीं, छोटे तरीके से कराना है तो और इजी. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर which produce pollen grains. And pistil, pistil और कार्पल. पिस्टिल और कार्पल एक ही बात है. इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर.
ठीक है जी. सो दिस इज फ्लावर. उसके बाद सो स्टेमन्स. This is stamen. This is, pistil. Anther. Filament. Anther produce pollen grains. Pistil. Stigma. Style. Ovary. And in ovary, there are ovules. These are ovules. Then there occurs pollination. If the pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower, bisexual flower होगा. This is, ये है pollen grains. This is self pollination. This is self pollination. फिर एक है सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर पे पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं. The pollen grains are transferred from one flower to another flower of same plant. This is cross pollination. Likewise, प्लांट 1 से प्लांट 2 में पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं. दिस इज ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन. No pollinating agent, write down, no pollinating agent is required in self pollination. No pollinating agent is required in self pollination. But cross pollination requires either wind or insects or bats. Then what happens? ये मैं थोड़ा रब कर रही हूं. पॉलिनेशन आपको पता चल गया. This is pistil. This is ovary. ओवरी में कई ओव्यूल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं. राइट डाउन. One ovary may have one or more than one ovule.
ये मैं एक ही ओव्यूल की बात कर रही हूँ। अभी टाइम कम होगा, नहीं बना पाओगे, बट go at home and draw. This is ovule, right? So in ovule, ये बनाना, ये this is ovule. In the ovule, there is present, ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। आ जाइए, बस 2 मिनट की बात है। दिस इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में ये एग है और ये दिस इज एग। ठीक है, घर जाके ये दोबारा से बनाना। दिस इज पोलन ग्रेन, इट germinates to form pollen tube. One pollen tube या one pollen grain form 2 male gametes. या स्पर्म्स हम कह सकते हैं। Then there occurs fertilization. Fertilization का क्या मतलब है? Means fusion of egg with sperm to form zygote. Zygote forms embryo. Embryo forms seed. And seed again forms new plant. ठीक है, एक ये लाइफ साइकिल है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखो जो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट? एक डबल फर्टिलाइजेशन बताएंगे, सीड एंड फ्रूट वी विल डू। यू मस्ट हैव ऑल, यू हैव, डू यू हैव द वर्कशीट्स? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव। Yes, try to do that worksheet. We will discuss this double fertilization, seed, fruit, and we will discuss worksheet next time. Right? Okay, beta. Thank you. Now, मैथ्स टाइम है, टाइम हमारे पास नहीं है। इनर्शिया ऑफ वर्क में रहना है, ठीक है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में नहीं जाना, इनर्शिया ऑफ वर्क में, मोशन में रहना है। एंड यू नो वी विल स्टार्ट विथ मैथ्स क्लास, राइट? ओके, थैंक यू सर। स्टूडियो ऑन है। जी, very good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Back after a long time, long holidays. I hope you must have enjoyed all your holidays. Enjoyment के साथ साथ स्टडी भी किया नहीं किया बच्चों? 10th की आपकी क्लास है। जी students, so have you got the assignment, all of you? Please raise your hand if you have got the assignments. No. Only section C has received. Section A and B. You haven't received the math assignment? Sir, yes. ये है ना, तो फिर बेटा रेज करो ना हैंड। चलो, right. So we have started trigonometry before the holidays, right? So everybody knows the basics. चलिए मैं पूछ लेता हूँ फटाफट से। Who will explain me about the trigonometric ratios?
There are how many trigonometric ratios? 6 trigonometric ratios बच्चे, 6 आइडेंटिटीज नहीं पूछ रहा हूं मैं, रेशियोज. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, secant theta and cosecant theta. These are the trigonometric ratios, right? So you should know. शॉर्ट में मैं इनको बेटा साइन, कॉस, टैन, कॉट, secant and cosecant. Right? What is sin theta? P upon H. Cos theta? V upon H. Tan theta? P upon V. स्टूडेंट जब तक आप इसके साथ एंगल नहीं लगाओगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है. दिस हैज नो मीनिंग, सो यू हैव टू पुट एंगल. एंगल कैन बी represented by theta, A, B, C or any other Greek letter. This is clear? Right? So now what is cot theta? Secant theta? H upon and cosecant theta? Now what are the 3 trigonometric identities? 3 trigonometric identities. Have we done this? Student, have we done it or not? Yes. So please tell me. First one was sin square theta plus cos square theta equal to. Next one was secant square theta equal to 1 plus. Next one is right, and इनको modify करना आता है बच्चों. Now if I have this identity, from this one find the value of sin theta. What will be the value of sin theta from first identity? Under root 1 minus cos square theta, right? See, we have this sin square theta plus cos square theta equal to 1. What will be sin square theta? 1 minus cos square theta. And sin theta will be equal to under root 1 minus cos square theta. Similarly, cos square theta will be equal to 1 minus sin square theta. And cos theta will be equal to. बच्चों ये भूल गए आप लोग बेटा. whenever you will be doing the question based on the identities, that is the last exercise, so you will require all these results. Similarly, we have the second identity, that is secant square theta equal to. So what will be secant theta from this identity? What will be secant theta बच्चों? Under 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. And what will be your tan square theta? Tan square theta. Secant square minus. Secant square theta minus 1. Right? And tan theta? Secant square theta minus 1. Another very important result from this identity is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Is this clear बच्चों? Yes. यहाँ तो कोई डाउट? ये आपको नोट तो नहीं करनी है? ये करनी है? फटाफट करो फिर अगर करनी है बच्चों.
हो गया बच्चों, चले आगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, डन। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं बेटा। थर्ड आइडेंटिटी इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 plus cot square theta. So what will be cosecant theta here? 1 plus cot square theta under root, right? And what will be cot square theta? Cosecant square theta minus 1, right? And cot theta will be equal to cosecant square theta minus 1 under root. And one more result will be cosecant square theta minus cot square theta equal to 1. Right, students? So all these three identities can be represented in 5 different forms. Is it clear बच्चों? तो चलिए आप क्वेश्चंस पे चले हम। असाइनमेंट ओपन कीजिए बच्चों सब। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ cos theta equal to 1/2, cos theta equal to 1/2 and cos phi, बच्चों ये ग्रीक सिंबल होता है, दिस इज नोन एज phi, PHI, राइट? कंफ्यूज नहीं होना है कि ये थीटा है क्या है, राइट? And sin phi, it's not cos phi, and it is given sin phi is equal to 1/2. क्वेश्चन में बेटा गिवन है थीटा प्लस पी, पी नहीं है, दिस इज phi, so you have to find phi, theta plus phi. Is this clear students? Can you calculate this value? Yes. Cos theta is 1/2. What is the meaning of this? Then theta will be equal to 60 degree, right? Because cos theta equal to cos 60 degree. So therefore theta is equal to, similarly sin phi will be equal to 1/2. So sin 1/2 कब होता है बेटा? 30 degree. So phi is equal to, 30 degree. so our answer will be for theta and phi 90 degree. 90 degree. Clear बच्चों? Yes. Any doubt? Similarly, next question. Second question students, ये नोट करना है? Yes. कर लो बराबर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin a plus b equal to 1 equal to cos of a minus b, right? Is this clear? Then कुछ कंडीशन गिवन है वो फाइंड आउट करना है। Now what is the meaning of this statement? The meaning of this is कि this is also equal to 1, sin a plus b equal to 1 and
cos a minus b is also equal to 1. Now sin 1 कब होता है बच्चों? 90. So what is the meaning of this? Sin a plus b is sin 90. From here a plus b की वैल्यू कितनी आ गई? 90. Similarly, cos a minus b. When is the cos 1? 0. Right? So this is cos 0 degree. So from here, what is a minus b? 0 degree. Now just check your option. Which one will be correct? हाँ जी बच्चों. Which one will be correct now? How to solve this? बड़ा सिंपल है बेटा. आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई. यहां से आप a और b की वैल्यू निकाल देंगे. Yes. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर किया है ना हमने. So this cuts 2a is equal to 90 degree. Right or not? Yes. So what is the value of a? 45. What will be the value of b? a equal to b आ रहा है बेटा यहाँ से. So that will also be equal to 45. Now just check the option. So what will be the right option now? a minus b equal to 45. बेटा यहाँ पे ऑप्शन ही सारी मुझे तो रॉन्ग है जी. a minus b 90. यहाँ पे बेटा ऑप्शन ही रॉन्ग है चारों. राइट? बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑप्शन में ना, डी ऑप्शन जो है a इक्वल टू बी कर लो. राइट? सो देन योर आंसर विल बी डी. इज दिस क्लियर? Yes. राइट जी. Shall we move to the next question? ये नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, प्लीज टेल मी. आई थिंक देयर आर सम डाउट्स इन दिस क्वेश्चन. सबको क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर और नॉट? इफ क्लियर ये रेज योर हैंड्स. Right. So we move to the next question, students. The value of sine 30 degree plus cos 30. You just need to put the value of sine 30, cos 30, sine 60, cos 60. Sine 30 plus cos 30 minus sine 60 plus cos 60. What is the value of sine 30 degree, students? 1 by 2. 1 by 2. What is the value of cos 30? By 2. Root 3 by 2. What is the value of sine 30? And cos 60? 1 by 2. So both the brackets are same. ये देखिए बेटा, जब आप इसको ओपन करेंगे ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे. Is this clear? This cancelled, answer will be 0. Right? क्लियर है? वैल्यूज तो आप लोगों को याद हो गई होंगी अब. हाँ जी स्टूडेंट्स. सेक्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. फोर्थ क्वेश्चन.
सेक्शन ए का वीडियो फ्रीज हो गया है. I think there is connectivity issue in section A. Okay, we move to the next question, that is question 4. The value of tan 30 degree over cot 60 degree. What is the value of tan 30 degree, students? What is the value of tan 30 degree? हाँ जी, 1 by root 3. What is the value of cos 60 degree? 1 by root 3. So it will be, both will be cancelled. Answer will be 1. Is this clear? So option D will be the right choice. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ पे. इन ए राइट एंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी. दिस इज राइट एंगल एट सी. tan A, let's say this is A. Tan A is 8 by 15. Find the value of cosecant square A minus 1. Anji, who will explain me how to do this question? Please raise your hand. Otherwise, I'll call. Anji, section B. Section B, Parneet, please come. Section B, Parneet, can you hear me? Sir, yes. Anji, beta, how to do this question? Sir, by Pythagoras theorem. Yes, you can do it by Pythagoras theorem also. How to do by Pythagoras? Sir, h square is equals to p square plus b square. Very good. Now, we have been given tan A equal to 8 by 15. So, what is tan A? बेटा tan A ट्रायंगल की साइड्स की फॉर्म में क्या होती है रेशो? It is P by B. Sir, Right? yes. Sir, So, yes. your perpendicular will be 8K and base will be 15K. So, can you find the hypotenuse? Sir, yes. What will be hypotenuse? Sir, by Pythagoras. Yeah, by Pythagoras only. Please solve this. Sir, h square is equals to p square plus b square. Uh, H square is equals to 8 square plus 15 square. right, 8K square plus 15K square. 15k square. Anji, what is the square of 8? So yes, 64k. 15 का square? 225k square. ऐड किया कितना बन रहा बेटा? सर इसको ऐड कर देंगे. अंजी कितना बना? So H will be equal to Under root 289k. what it will be? सर 17k. Right. So आपके पास hypotenuse कितना आ गया? 17k. What is the value? What we have to find out? Cosecant square A minus 1. What will be cosecant A? What is the value of cosecant A? Sir 17. 17. Sir 8. 17K upon 8K. So both will be cancelled out KK. Yes. 17 by 8. So
the value of cosecant square a minus 1 will be, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 17 by 8, 17 by 8. राइट? इसको सॉल्व करके बताओ जरा. हाँ जी, कीजिए सॉल्व जरा. जाना बोलो पता 17 by 8 होल स्क्वायर. अभी हमने किया है ना, देखो 17 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर क्या है? 289. तो दिस विल बिकम, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ. 17 square 289 by 64 minus 1. That will be, so this will be the answer, right? Yes. Is this clear? Yes. So you can note down, students. Note कर लीजिए बच्चों. There can be one more method to solve this question. Can anybody tell me how? You can solve this by identities. अभी जब हमने identities revise की थी, so cosecant square a minus 1, it used to be equal to, it is equal to, किसके इक्वल था बेटा? Cosecant square a minus 1 Square theta. cot square a. Now tan a is given, we can find out cot a. The reciprocal of tan a is cot a. Yes. So that value is, so cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इनको दोनों को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. 15 by 8 whole square. Yes. So that is the easier method if you know the trigonometric identities. और जब तक आपका एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो हो ही जाएंगी तब तक तो अच्छे से. So this is a shortcut, right? तो ऑप्शन कौन सी आएगी बच्चों? आंसर बी ऑप्शन. Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी. अब देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. This is angle C. Let's say this is A. This is what they have find out. They have asked for cos A plus B. We have to find the value of cos A plus B. How to find out? Who will tell me? Raise your hand. कौन बताएगा बच्चों? Anyone from all the three sections. Right angle triangle ABC, right angle at C. We have to find the value of A plus B. Who will explain me? Please raise your hands. बच्चों, what will be the sum of angle A plus B? What will be the sum of angle A plus B? 90 degree. बस सिंपल सी चीज थी. cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0. बस जीरो आंसर आ गया, राइट? इज दिस क्लियर? Yes. सो थोड़ा सा सोचोगे तो आपको क्वेश्चन देख, अगर आप स्ट्रेट अवे देखो a प्लस बी, हमें a की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू नहीं पता, बट वी हैव टू फाइंड a प्लस बी. ये सेक्शन 10th बी में फ्रंट बेंच पे दो गर्ल्स बैठी हैं, and I am observing from last 20-25 minutes continuously talking. They might be discussing, but beta, this is not the time for discussion. Yes, move to the next question. 7th question बच्चों.
Sin A is given 1/2. Find the value of cot A. Anji, how to do this? Who will explain me how to do this question? Yes, students. Why you are not responding today? Teacher present, please look. Why they are not responding even to the simple questions? Root 3. Root 3. How you come to this conclusion? It is root 3. कैसे किया बेटा? ये बताओगे आप मुझे कि रूट 3 कैसे आया? सर साइन ए की वैल्यू p अपॉन h होती है, तो साइन ए की वैल्यू हमें बताएगी कि 1/2 है। राइट, तो ये 1/2 आ गई मतलब. Is this clear? Then what you have done? सो सर पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस की वैल्यू फाइंड कर कॉस का जो फॉर्मूला है b अपॉन h, उसकी वैल्यू लगाकर हमने फाइंड कर लिया। कॉट की वैल्यू बेटा b अपॉन h नहीं होती, b अपॉन p होती है. सर सर राइट, सो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, वी कैन from the sin A we know that sin A is p upon h. So perpendicular and hypotenuse are given to us. So by using Pythagoras theorem we can find out the base. Then by the definition of cot A we can find out the value of cot A. Another method is बच्चों, sin A is 1/2. So when is sin A 1/2? sin A 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे. So what is the angle A? 30 डिग्री। बस आप cot 30 की वैल्यू निकाल दीजिए. So this can be the right. This can be the another method. But ये मेथड आप तभी लगा सकते हैं जब आपको सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की एंड डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज पता हो. राइट, इज दिस क्लियर? दिस इज अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. राइट, बट इसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8, रूट 2 साइन. ओके, just have a look at this question. Root 2 sine 60 minus alpha is equal to 1. Then the value of alpha. Alpha की value find out करनी. Who will explain me how to do this question? You have done lot of question of this type. आपकी NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों. Not exactly the same but matching. Yes, who will explain me from section C? Anyone? Section C. No one. Why? Beta, can we write this as 1/√2? yes, Sine is 1/√2 at what angle? 45 डिग्री। 45 degree. So sine 60 minus alpha equal to sine 45 degree. Therefore 60 minus alpha is 45 degree. So what will be the value of alpha? 15 degree. Right? Is this clear? 45 plus alpha and alpha equal to, which is
15 degree, right? Is it okay, बच्चों? Is it okay? चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके बच्चों, नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9. द एक्सप्रेशन of sin A in terms of cot A. Sin A in terms of cot A. Have we done this type of questions? Students, have we done? No. बेटा थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है. They are of the same type. Have we not done that exercise? No. Okay, no problem. So now students, to solve this question, your basic knowledge about trigonometric identities and ratios, right, is very important. Now you should know what is the relation between sine and cot. Is this clear? Right? So उसके लिए हमें क्या करना होगा? देख, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है बेटा. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. अनदर इज secant square a equal to 1 plus tan square a. Another is right. So we have to write sin a in terms of cot a. So which one we can use now? Tell me which one we can use and why. Can we use this? Cot a is not there. इसको तो छोड़ दो ना बेटा. Now from these two, which will be used? Last one. Why not second one? Because it don't have the cot. Moreover, the reciprocal of cosecant is cosecant का reciprocal क्या होता है बेटा? Sine. So can't we write this as? Can we write this? Yes or no, बच्चों? Now what will be sine square a? What will be sine square a? रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा ये भी. And what will be sin a? ये हो जाएगा. And 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, so you will write it like this. Right, students? Is this clear? Beta, is this question clear or not? Yes. Any doubt, beta, please let me know. These are very tricky type of questions, right? You have to think out of the box to solve this, to develop the relation between one identity, one ratio and another ratio, right? Shall we move to the next question? Have you noted? Yeah. Note down. चलें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, secant 4a plus secant square a is equal to, ऑप्शंस गिवन है आपके पास। ऑप्शन जो आप देखेंगे, एवरी ऑप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बेटा? tan की फॉर्म में है। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस secant 4a plus secant square a in the form of tan a. So how to do that? Is there a relation between secant and tan? Secant a is equal to this identity we can use here. So now this is given to you secant 4a plus secant square a. Can you take secant square a common? Yes or no? Yes. So what you got? Secant square a plus, I think question में it is not plus, it is minus. Right students? What is secant square a minus 1? इसको आप 1 को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो बन जाएगा बेटा secant square a minus 1, which is equal to tan square a. Now what we'll do, we use this identity 2 times. How? In place of this secant square a, we'll write 1 plus tan square a, and in place of secant square a minus 1, we'll write. Is this step clear, बच्चों? Is this step clear or not? Yes. बस solve कर दो, multiply कर दो, you got the answer. This will be the right choice. Got it? The right choice will be your option D. Is this correct, बच्चों? Yes. Shall we move to the next question? देखिए बेटा next question देखिए. If x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, then the value of b square, we have to find the value of this, right? So we have to find the value of b square x square plus a square y square. See student, whenever you have this type of question, so what you have to do in this, you have to make one of the three identities. Now we have here sin theta and cos theta. Can we find out their value? What is the value of cos theta? What is the value of cos theta? बेटा x को डिवाइड कर दो ना a से. Is this clear? Is this step clear or not? Yes. What is the value of sin theta? Now we have got the value of sin theta and cos theta. Let's say this is equation 1, this is equation 2. What is the identity for sin theta and cos theta? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now, see in the question as well as choices, there is no theta. बच्चे आपके पास b square x square plus a square x square find करना है. But in the option there is no theta. So we have to eliminate theta in this. So what we'll do, we'll squaring 1 and 2 and adding. Do the square of both and add.
What will be the square? Cos square theta plus, is this clear बच्चों? Is this step clear? Cos square theta का square x square plus a square, sin square theta का square y square plus b square. We have added both. So on the left hand side it will be 1 equal to, take LCM on the right side. Is this clear? This step clear or not students? हमने जो है बेटा sin square theta plus cos square theta की वैल्यू पुट कर दी 1 and on the right side we have taken the LCM. Is this step clear? If yes, raise your hands. If no, no वाले बच्चे काफी हैं. I'll again explain. First of all, we have find out the value of cos theta and sin theta from the given data. Cos theta is x by a and sin theta is y by b. Then we have squaring both these. When you will square this equation both sides, this will become x square cos square theta equal to x square over a square, and second equation will become, is this step clear? Since we are supposed to eliminate theta, we have added sin square theta plus cos square theta so that we can write one in their place. तो हमने दोनों को ऐड कर दिया. अगर लेफ्ट साइड ऐड किए हैं तो राइट साइड भी ऐड करनी है, राइट? तो दोनों साइड राइट साइड वाली ऐड कर दी. In place of sin square theta plus cos square theta we have 1. So 1 is equal to b square x square plus a square y square equal to divided by a square b square. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. So we were supposed to find out this value. यही फाइंड आउट करना था बच्चों हमें. So what is the value of b square x square plus a square y square? A square b square, right? So which option is the right option? Option A. Please note down this question. Very, very important question. From last 3-4 years, this type of questions are coming in the exams. हाँ जी, हो गए नोट डाउन? यस. चलिए स्टूडेंट्स, बेटा जल्दी से कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया. Sir, next period has started. Okay, बच्चों, so this is our last question for today, right? So we'll continue this assignment in the next class. So thank you very much. Bye, sir. Okay, बच्चों. Thank you, teachers.